हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीज़न 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में कि हम लोग इसके बाद में सीज़न 3 ही करने वाले हैं। तो जो सीज़न 3 है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication is the message we send to the other without using any word as shown in the figure 1.4. We send signals and messages to other through experience, gesture and body posture. In this season, you will learn about the non-verbal method of the communication, its type and importance. You will learn to use the correct body language like gesture, eye contact, handshake, etc. As all of you can see on the figure 1.4, which is non-verbal communication, we can also send the message without using any words. For example, by handshake, by gesture, body posture, expressions, language, acting, eye contact, and space between the person who space between them. Okay, now importance of non-verbal in our day-to-day communication. It is observed that the most of the communication is done using body movements, face, arms movements, etc., and voice control, voice tone, pauses, etc. मीन्स हमने अपनी पूरी डे टू डे लाइफ में देखा है, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन और ऑब्जर्व भी किए हैं. As we can see in the figure 1.5, maximum communication is non-verbal. We communicate using words, tones, and voice and body language as shown in the figure as shown in the figure 1.4. As all of you can see the figure 1.5 and 1.4. So you can all of you see the web chart. There is a mostly use of the expressions, movement, pictures, non-verbal and visual communication. Less use of verbal communication, and small large use of voice control, which is non-verbal communication. Now let's come to the table. Hand movement, as I told you, as you can see in the figure. Expressions. Now, non-verbal communications makes our message stronger. Using the right gesture while speaking makes our message more effective. Knowing non-verbal communication help us understand our audience reactions and adjust our behavior or communication accordingly. Means non-verbal communication makes our message strong, and we can use a right gesture while speaking. That's why the non-verbal communication help the audience to understand what we are saying to. Okay, and our behavior they are also noticed. Using the right gesture and a posture help us to perform professional work at work. If verbal messages are blocked by noise or distance, etc., we can use hand movements to exchange our messages. Placing a finger on the lips or to indicate the need to silence, and nobody heads up saying yes. We communicate non-verbally many ways. Let us learn about these. See table 1.5. As all of you can see, we can use the stickers while we are replying to other persons. We can use happy if we are happy. Crying, then we can use the crying sticker. If we are in एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम बहुत मतलब चौंक जाते हैं इस बात को, तो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ स्टिकर्स. देन गुस्सा है तो ये वाला, और बहुत प्यारी सी चीज़ है तो ये, और अगर हम शर्मा रहे हैं तो ये. ठीक है, हम आँख मार रहे हैं ऐसे, तो बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं. अब body posture are the position. You can see if we are so sad, then we can use the
we sit like this. We put the hand over our head. If we are moving slowly or uncomfortably, then it is also known as sad, or we have any kind of problem. Gesture of the body language. Some people says that your teachers will say that if you have any doubt or any queries, you can raise your hand. I will ask one by one. You can raise your hand. Yes or no? Yes. Now touch. If we are friends, we can shake our hands. Uh, if we are fighting with each other, we never shake our hands. We just fight with each other. Okay. The space between two person while communicating depends on the closeness between them. You can see the figure. Eye contact. आंखों आंखों से बात करना. और लैंग्वेज जो बिना वॉइस और टोन की होती है, वो जैसे गेम है ना आपका, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसको, जिसमें कुछ लोग एक दो टीम बांटी जाती हैं, और हाँ, दमशल आर्ट्स. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. विजुअल कम्युनिकेशंस. Another important method of communication is visual communication, which involves sending and understanding messages only through images or pictures. The main advantage of this type of communication is that you do not need to know any particular language for understanding it. Means another और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं समझने के लिए कम्युनिकेशन को, विजुअल कम्युनिकेशन को भी. ठीक है. तो जो हम मैसेज भेजते हैं समझाने के लिए, इमेजेस भी भेजते हैं, पिक्चर्स भी भेजते हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो हर एक लैंग्वेज के होते हैं ये. इट इज़ सिंपल, easy to understand and remain same across different places. Table 1.6 shows some common types of visual communication. As you can all of you see the uh, table 1.6. This sign is of no horn, of lights. Red light is for stop, yellow, ready, green, go. This is for ladies and gent toilets signs. You can see in the public toilets there is shown as the figure ना, फिगर दिखा रखी होती है. यहाँ पे रेलवे स्टेशन का है कि यहाँ पे रेल ट्रेन जाने वाली है. यहाँ पे ध्यान से चलो नहीं तो गिर जाओगे. यहाँ पे फायरिंग का है. पॉज का बटन है जब हम वीडियो चलाते हैं. और ये नो स्मोकिंग का साइन है. ठीक है. अब हम करने वाले हैं exercise. Okay. Read the question carefully and circle. Okay. चलिए. Which of these is a positive means good facial expressions? इसमें कौन से facial expressions हैं? Staring hard, no. Nobody while listening, no. Wrinkling forehead, no. Looking away from the speaker, no. इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव, सबसे गुड और एक्सप्रेशंस क्या हैं. नोबडी वाइल लिसनिंग. आई थिंक इसका होगा व्रिंकल्ड सी पार्ट. तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डज द अपराइट मीन्स स्ट्रेट बॉडी पोस्चर टू कन्वे समवन. शाइनेस, फियरनेस, कॉन्फिडेंस या इंटेलिजेंस. तो योर आंसर इज कॉन्फिडेंस. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट an appropriate non-verbal communication at work. Putting arms around a cow works. Shoulder, no. Shaking hands fairly, ये थोड़ा बहुत हो सकता है. Looking at the speaker with a smile, no. Standing with an upright posture, नहीं. एक मिनट. हाँ, तो शेकिंग हैंड वाला नहीं होगा इसमें आंसर होगा डी वाला.
क्योंकि हमें स्टैंड होना चाहिए स्ट्रेट, व्हेन बॉडी स्ट्रेट पोस्चर में स्टैंड होना चाहिए हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन यू शुड practice, focus on the objective of the presentation, no. Practice your speech in front of the mirror or a friend, yes. Do rehearsal to the time your presentation of the, तो ये सारे ही हैं, इसलिए ये सारे ही हैं, तो इधर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस अबव, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अब ये वाला आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है।